वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूरेनियम डील विद कनाडा। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और कनाडा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ यूरेनियम के लिए, इंडिया की न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। तो कैमको जो है वहाँ की कंपनी कनाडा की, वो लगभग 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम इंडिया को देगी 2027 से 2035 के बीच में। लगभग 2.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की ये डील हुई है। ये इंडिया की सेकंड मेजर यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट है विद इन 1 मंथ। इससे पहले कजाकिस्तान के साथ की गई थी एक डील जिसकी डिटेल्स बाहर नहीं निकाली गई। इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं तो, लेकिन उसका क्वालिटी जो है वो रिलेटिवली लो है। अगर हम कंपैरिजन में देखें तो कनाडा के जो है यूरेनियम कंसनट्रेशंस काफ़ी हाई हैं। तो इन लिमिटेशंस की वजह से लगभग 70% से ज़्यादा इंडिया की यूरेनियम नीड्स को हमें इम्पोर्ट से मीट करना पड़ता है। इंडिया की जो डोमेस्टिक यूरेनियम प्रोडक्शन है वो प्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए की जा रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट का जो है एम है कि वो 9 गीगावाट की जो कैपेसिटी है अभी उसको बढ़ाकर 100 गीगावाट तक कर दे 2047 में न्यूक्लियर कैपेसिटी को। और इस एक्सपेंशन के बावजूद डोमेस्टिक प्रोडक्शन फिर भी सिर्फ 30% ही जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएगी। इंडिया करंटली 1500 से 2000 टन ऑफ यूरेनियम हर साल यूज़ कर रहा है, और अगर एक्सपेंशन होगी न्यूक्लियर पावर की तो 5400 टन तक की जो है एनुअल डिमांड हो जाएगी। तो इंडिया के जो यूरेनियम प्रोडक्शन है मेनली झारखंड आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है या कंसनट्रेटेड है। 7 माइंस वहाँ पर ऑपरेशनल है, लेकिन यूरेनियम डिपॉजिट्स जो है आपको देखे गए हैं मेघालय, राजस्थान और तेलंगाना में भी। इंडिया का टोटल यूरेनियम रिसोर्सेज जो है वो लगभग 4.3 लाख टन है यूरेनियम ओर का, और मोर देन 80,000 टन जो है वो लोकेटेड है माइंस में जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। तो ये न्यू यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट जो हैं इंडिया की इम्पोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए किए जा रहे हैं। और ये कनाडा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है दिखा रहा है कि बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव भी हुए हैं। इंडिया और कनाडा का जो है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन 1950 से चलता आ रहा है, और उन्होंने इवन हमें राजस्थान का एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बनाने में भी हेल्प किया था। अब न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया जो है वो यूरेनियम कई कंट्रीज से खरीद पा रहा है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कनाडा, रशिया से भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिली है। इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो हम उसमें जो है अल्टीमेटली थोरियम पर रिलाय करने वाले हैं जो लास्ट स्टेज होगा। तो कंट्री के पास लार्ज थोरियम रिजर्व्स हैं, तो इसलिए ये अप्रोच बहुत अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस के लिए। फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम यूज़ होता है, सेकंड स्टेज में जो यूरेनियम से जो प्लूटोनियम बना है वो यूज़ होता है, थर्ड स्टेज में थोरियम यूज़ करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया। टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है ग्लोबली सेकंड रैंक पर आया है इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी। तो लगभग 1 in 5 चिल्ड्रन जो 5 से 19 साल के बीच में है वो ओवरवेट या ओबीज है। लगभग मतलब 20% जो है वो चिल्ड्रन ग्लोबली जो है वो ओबीज हैं। चाइना, इंडिया और यूएस सबसे ज़्यादा जो है वो इस बर्डन में प्रपोर्शन दे रहे हैं। और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के हिसाब से 507 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड जो है वो ओवरवेट या ओबीस होंगे बाय 2040। इंडिया जो है वो ग्लोबली सेकंड रैंक पर है चाइना के बाद इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी। और अगर हम देखें तो 41 मिलियन चिल्ड्रन इंडिया में उनका हाई बीएमआई है। अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो ओबेसिटी के साथ रह रहे हैं। लगभग 14.9 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 से 9 साल के बीच में है वो ओवरवेट या ओबीज हैं। तो ये फिगर्स जो है वो हमारे को यूएस से आगे कर रही हैं इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अफेक्टेड बाय ओबेसिटी हैं। तो वर्ल्ड ओबेसिटी जो एटलस है उसने प्रोजेक्शंस दिए हैं 2025 से 40 के बीच में। इसमें कहा गया है कि 20 मिलियन चिल्ड्रन जो इंडिया में है वो लगभग ओबेसिटी से रहेंगे के साथ जिएंगे 2040 तक, और 56 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो ओवरवेट या ओबीस हो जाएंगे बाय द सेम पीरियड। तो केसेस ऑफ बीएमआई रिलेटेड हाइपरटेंशन जो है वो राइज हो जाएगा, डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। और इसकी वजह से जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का बर्डन इंडिया में बढ़ेगा। ठीक है, तो क्यों कहा गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये ओबेसिटी बढ़ती जा रही है? फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, डाइटरी पैटर्न्स पुअर हैं, लिमिटेड स्कूल न्यूट्रिशन कवरेज है, अर्ली लाइफ न्यूट्रिशन के चैलेंजेस हैं, मैटरनल हेल्थ रिस्क भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कशिंग्स सिंड्रोम। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रीसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं या एक्सपैंड हो रहे हैं कशिंग्स सिंड्रोम के। तो ये एक डिसऑर्डर है जो अकर होता है जब बॉडी बहुत ज़्यादा हार्मोन कॉर्टिसोल बनाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल। मोस्ट कॉमन कॉज है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉयड मेडिसिन जो ज़्यादातर अस्थमा, ऑटोइम्यून डिसीजेस, आर्थराइटिस या आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट दी जाती हैं। अब इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा जो है कॉर्टिसोल बनाने लगती है ड्यू टू अ नॉन कैंसरस ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वेट गेन होने लगता है बॉडी में, खासकर एब्डोमेन और फेस के पास। एक्नी और जो है फेशियल या बॉडी हेयर आने लगते हैं विमेन में। फिर हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर भी हो सकता है। विमेन सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड रहती हैं।
तो इसमें अगर स्टेरॉइड मेडिसिन कॉज है तो ऑफकोर्स उसकी डोज का तो कम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कैसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक स्टडी वार्न कर रही है कि लगभग 1/3 ऑफ अफ्रीका जो है वो एट द रिस्क है कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज के। तो ये एक डिवास्टेटिंग डिसीज है जो लॉस ऑफ कसावा रूट ट्यूबर प्रोडक्शन जो है और उसकी क्वालिटी से होती है, और इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था अफ्रीका में, इन द कोस्टल रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका। प्राइमरली ये वाइट फ्लाई से स्प्रेड होती है। सिम्टम्स में क्या होता है कि जो है ये दिखने लगते हैं सिम्टम्स आपके लीव्स, स्टेम्स या कसावा रूट्स में। और ये जो ऑब्जर्व किया गया है कि ये क्लीन सीड सिस्टम्स को वीक करती हैं, वाइट फ्लाई ट्रांसमिशन से फैलती है, और क्लाइमेट प्रेशर्स जो है ये इस डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है इंडिया की कमिटमेंट दिखाई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हर साल 3 मार्च को बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2013 को ये एस्टैब्लिश किया था, 2013 में एस्टैब्लिश किया था जब थाईलैंड ने प्रपोजल दिया था। तो तब जो है यूएन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया 3 मार्च को एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और फर्स्ट सेलिब्रेशन 2014 में हुई थी। इस डेट को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि 1973 में जो साइट्स है वो साइन हुआ था उसी सेम डे पर। तो अगर हम देखें तो लगभग 70 से 95% जो पीपल हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जो है डिपेंडेंट है, जो कि आपके जो प्लांट्स हैं उस पर डिपेंडेंट है। इंडिया जो है वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज़ है, जिसमें कि लगभग 15,000 मेडिसिनल प्लांट्स और स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो now let us see all these topics in English. So the first topic is uranium deal with Canada. This topic is important for your economy section. So India and Canada have signed an agreement for the long-term supply of uranium to fuel India's nuclear reactors. Under this deal, Canadian company Cameco will supply about 22 million pounds of uranium to India between 2027 and 2035, and this contract is valued at about 2.6 billion Canadian dollars. So this is India's second major uranium supply agreement within a month, and earlier India has finalized a similar deal with Kazakhstan's state-owned company Kazatomprom. Okay, so India has uranium deposits, but the quality of its ore is relatively low. Some mines in Canada contain uranium concentrations. If we look at India's concentration of uranium in Indian mines, it is just between 0.02% and 0.45%. In comparison, some mines in Canada contain uranium concentrations as high as 15%. Due to these limitations, more than 70% of India's uranium needs are currently met through imports. So India is increasing domestic uranium production to support the planned expansion of nuclear energy. The government is aiming to raise nuclear power capacity from about 9 gigawatt today to 100 gigawatt by 2047. Despite this expansion, domestic production is expected to meet only about 30% of the fuel requirements of nuclear power plants in the future. India currently consumes about 1,500 to 2,000 tons of uranium each year, and if we expand our capacity, then annual uranium demand could rise to about 5,400 tons. India's uranium production is mainly concentrated in Jharkhand and Andhra Pradesh, where 7 mines are currently operational. But uranium deposits have also been found in states like Meghalaya, Rajasthan, and Telangana. India's total uranium resources are estimated at about 4.3 lakh tons of uranium ore. So more than 80,000 tons are located in mines allocated to Uranium Corporation of India. So these new uranium supply agreements aim to diversify India's import sources and meet rising nuclear fuel demand. This agreement with Canada also reflects our improving bilateral relations. India and Canada have also had nuclear cooperation since 1950s, and Canada has helped establish nuclear reactors at the Rajasthan Atomic Power Project in 1960s. So, with the new agreement, India now imports uranium from several countries, including Uzbekistan, Kazakhstan, Canada, and Russia. Russia has also committed to long-term fuel supply for reactors at Kudankulam in Tamil Nadu. So, India aims to develop a 3-stage nuclear power program, and because our aim is to finally move to thorium reserves, because we have the world's largest thorium reserves. So this approach makes the nuclear power attractive for long-term energy security and independence. So just a quick glimpse that the first stage nuclear reactor will be uranium based. The second stage is the fast breeder reactors, which will be using the plutonium produced from the first stage. The third one will be the ultimate one, in which we will be using our thorium as the main fuel. Okay. So the next topic is childhood obesity in India. This topic is important for your social issues. So India has ranked second globally in the number of children living with overweight and obesity.
So, according to the World Obesity Atlas 2026, more than 1 in 5 children aged 5 to 19 worldwide are overweight or obese, representing about 20.7% of children globally. China, India, and US account for a large proportion of this burden. World Obesity Federation estimates that around 507 million children worldwide could be overweight or obese by 2040. India now ranks second globally after China in the number of children living with overweight and obesity. Around 41 million children in India have the high BMI. Approximately 14 million children are living with obesity. Nearly 14.9 million children aged 5 to 9 years were overweight or obese. More than 26 million adolescents aged 10 to 19 years were overweight or obese. These figures place India ahead of the US in terms of number of children affected by obesity. Okay, so the World Obesity Atlas provides projections for the period 2025-2040. Around 20 million children in India are expected to be living with obesity by 2040. Nearly 56 million children are projected to be overweight or obese by the same period. Cases of BMI related hypertension may rise from 2.99 to 4.21 million, so which is about just the double. So this could signal that we are going to witness increased burden of non-communicable diseases in India. So what are the factors which are supporting or contributing to the childhood obesity? First is the low physical activity. Then we have poor dietary patterns, limited school nutrition coverage, early nutrition challenges, and even maternal health risks. Okay. So the next topic is Cushing syndrome. This topic is important for your social issues. So recent studies have reported expanding treatment options for Cushing syndrome, which is a disorder that occurs when the body makes too much of the hormone cortisol. So cortisol is produced by the adrenal glands. So most common cause is the long-term use of steroid medicines prescribed for asthma, autoimmune diseases, arthritis, or after organ transplants. The body produces excess cortisol on its own because of a non-cancerous tumor in the pituitary gland. Weight gain happens especially around the abdomen and face. Acne and increased facial or body hair, especially in women, can also occur. Many people develop high blood pressure and high blood sugar. Women are most commonly affected. And if the steroid medicine is the cause, then doctors slowly reduce the dose under supervision. So the next topic is cassava brown streak disease. This topic is important for your environment section. So recently a study has warned that more than one third of Africa is at risk of cassava brown streak disease, which is a devastating disease caused by the loss of cassava root, that is tuber production and quality. It was first identified in Africa in the coastal region of East Africa. It is primarily spread by the whitefly. Symptoms of cassava brown streak disease can be observed on leaves, stems, and cassava roots. It is observed that weak, clean seed systems, whitefly transmission, and climate pressures accelerate the spread of this disease. Okay. So the next topic is World Wildlife Day 2026. This topic is important for your environment section. Prime Minister has reaffirmed India's commitment to wildlife conservation and sustainable practices on the occasion of World Wildlife Day. So this day is observed every year on 3rd of March, and it was established by the UN in 2013 after Thailand proposed to dedicate a day to raise awareness about wildlife conservation. On December 20th, 2013, UN General Assembly officially declared 3rd March as World Wildlife Day, with the first celebration taking place in 2014. On this very day, in 1973, CITES was signed on this day. Okay, so if we look at if we look at the importance of wildlife, then there is the theme of 2026 is medicinal and aromatic plants. So to look at that, we need to understand that about 70 to 95% of people in developing countries depend on traditional medicine or for basic healthcare. Much of it derived from plant-based sources. India is one of the 17 mega biodiversity-rich countries with around 15,000 medicinal plant species, of which 8,000 are used in Indian medicine. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.